So today we will discuss Faraday's law of electricity, Faraday's law of electrolysis, Faraday's law of electrolysis. We know during electrolysis, substance is deposited or liberated at the electrode. Faraday's law gives a quantitative relationship between the quantity of electricity passed and the amount of substance deposited at the electrode. हमें आगुरी जानिछंती जे इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन स्टेट रे बा एक्वस सॉल्यूशन रे नहीं ताको इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा परे इलेक्ट्रोड पाखरे सब्सटेंस डिपोजिट हुए बा डिस्चार्ज हुए बा लिबरेट हुए तबे केते अमाउंट रो करंट पास करिवा द्वारा केते सब्सटेंस डिपोजिट हला द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, that is the relationship between the quantity of electricity passed and the amount of substance deposited at the electrode is known as Faraday's law of electrolysis. तो Faraday's law of electrolysis को हमें दीटा लॉ कंसीडर करिया, गोटे Faraday's first law, another is Faraday's second law. According to the Faraday's first law, the mass of the substance deposited or liberated at the electrode as a result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Suppose उटे इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइसिस करिया परे W amount of substance deposit हला electrode पाखरे, mass of this is the mass of the substance deposited at the electrode. आमे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे Q कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी पास करचंती. So W gram of the substance is deposited, W gram is deposited at the electrode by passage of Q coulomb of electricity, Q coulomb of electricity. Then, according to the Faraday's first law, the mass of the substance deposited or liberated at the electrode as a result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. So, W quantity of substance deposited at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. W proportional to Q. This implies W is equal to ZQ, where Z is proportionality constant called electrochemical equivalent of the substance, electrochemical equivalent of the substance. We know Q is equal to
I into T, where I is current in ampere, current in ampere, and T is time in second, time in second. Then substituting the value of Q in this equation, we get W is equal to Z IT. W is equal to Z IT when current in ampere I is equal to 1 ampere, T is equal to 1 second. This implies Q is equal to 1 ampere into 1 second, that is 1 coulomb. Then W is equal to Z. W is equal to Z. So now we can define the electrochemical equivalent as the mass of the substance deposited at the electrode. Electrochemical equivalent इलेक्ट्रोड पाखे डिपोजिट होता सब्सटेंस मास सहित सामान केतेबेले ना जेतेबेले करंट 1 एम्पियर हेतिबो टाइम 1 सेकंड हेतिबो Q इज इक्वल टू 1 कूलम हेतिबो तेनो सीधा सीधा हम कहि परिबी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकंड or we can say that is a quantity of electricity 1 coulomb is passed. 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड पर्यंत गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करबा द्वारा जेतिकी मास रो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पाखरे डिपोजिट हुए ताकू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोली कहा जाए बा 1 कूलम्ब रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करबा द्वारा जेतिकी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पाखरे डिपोजिट होबो ताकू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोली कहा जाय। तबे फैराडेज फर्स्ट लॉ रे दिस इज द लॉ एठी हम तर गोटे एप्लीकेशन डिस्कस करिया जोटा प्रॉब्लम पई बेसी आवश्यक कोन ना देखटी सोडियम आयन सपोज सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे अछि इलेक्ट्रोड रिएक्शन रे कोन हला ना सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करे सोडियम मेटल आकार रे डिपोजिट हला गोटिए एटम रो सोडियम डिपोजिट हबा पई गोटिए इलेक्ट्रॉन आवश्यक 1 मोल रो सोडियम डिपोजिट हबा पई 1 मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक हमें 1 मोल रो आयन लेथिबा सिमिलरली मो कैल्शियम +2 कहली दीटा इलेक्ट्रॉन गेन कला करिया परे कैल्शियम आकार डिपोजिट हला जदि 1 मोल रो कैल्शियम डिपोजिट होथाय तबे इलेक्ट्रॉन केते आवश्यक ना 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक। सिमिलरली एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम आकार डिपोजिट हला न्यूट्रल एल्युमिनियम रे डिपोजिट हला जदि 1 मोल रो एल्युमिनियम डिपोजिट हुए तबे ता पई 3 मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक। तबे मु इन जनरल ए इक्वेशन को देखि कि कहि परिबी जदि मेटल आयन रो चार्ज n+ हुए तबे n इलेक्ट्रॉन गेन करी न्यूट्रल मेटल आकार डिपोजिट हुए तबे 1 मोल रो मेटल डिपोजिट हबा पई n मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक n मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक। ठीक है जी अच्छा देन सपोज
suppose atomic mass of metal is A, अतः ग्राम एटॉमिक मास केते ना A ग्राम, एक मोल रो मेटल माने ग्राम एटॉमिक मास ओजन रो मेटल A ग्राम, तेबे A ग्राम रो मेटल डिपोजिट हेबा पई केते इलेक्ट्रॉन आवश्यक हैला, n मोल रो इलेक्ट्रॉन आवश्यक हैला. सो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन deposit A gram of metal, n मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना n इंटू एक मोल इलेक्ट्रॉन माने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन. तबे n मोल माने एतिक इलेक्ट्रॉन, गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तेबे एतिकी कूलम डिपोजिट कला केते ना A ग्राम ऑफ मेटल. आउ थरे कहूची n मोल रो इलेक्ट्रॉन माने n इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन. एक मोल जेहेतु कही 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. तेबे n मोल हला एतिकी, गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तेबे n मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना, दिस इज द टोटल चार्ज n इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 1 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. A ग्राम रो मेटल डिपोजिट करियो, एक मल्टीप्लाई कले ये केते हला ना 96500 कूलम डिपोजिट A ग्राम ऑफ मेटल. 96500 एतिक मल्टीप्लाई करदे ये हला 96500 कूलम. तेबे n इंटू 96500 कूलम डिपोजिट करे केते ना A ग्राम ऑफ द मेटल. तेबे 96500 कूलम will deposit A by n gram of the metal, where A is atomic mass, n is valency of the metal. So A by n, atomic mass by valency, is equivalent mass. तेबे 96500 कूलम deposit equivalent mass of the substance, E gram of the metal, equivalent mass of the substance. आमे एठी पुणी कहवा जे 96500 कूलम को 1 फैराडे बोली कहा जाए. 96500 कूलम को 1 फैराडे बोली कहा जाए. तेबे 96500 कूलम is 1 फैराडे. So 1 फैराडे और 96500 कूलम डिपोजिट 1 फैराडे और 96500 कूलम डिपोजिट E ग्राम बा 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. जमती तमे कहूछ A ग्राम एटॉमिक मास टा जदि A हुए A ग्राम टा को 1 ग्राम एटम, सेमती इक्विवेलेंट मास जदि E ग्राम हुए, सो दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तने 96500 कूलम डिपोजिट कला E ग्राम इक्विवेलेंट रो सब्सटेंस, E gram of this metal by 1 gram equivalent. So 1 coulomb will deposit E by 96500 gram of the metal. आमे या पूर्व डिफाइन करथिले जे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to the mass of the substance deposited at the electrode when
1 coulomb of electricity is passed through the electrolytic solution. 1 coulomb electricity electrolytic solution रे पास करबा द्वारा हमें डिपोजिट केते सब्सटेंस डिपोजिट होला ना E by 96,500. Therefore electrochemical equivalent Z is equal to E by 96,500. So this is most important relationship. काउंसिल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ुचे जे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमें जो डिफाइन करथिले जे 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड पर्यंत इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करिया परे बा 1 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करिया परे इलेक्ट्रोड पाखरे जति की अमाउंट रो सब्सटेंस डिपॉजिट हुए ताकू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोली कहा जाए. तो हमें एठी डिराइव कले जे 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट E by 96,500 ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ग्राम ऑफ द मेटल E by 96,500 ग्राम ऑफ द मेटल. सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z is equal to E by 96,500. दिस इज Faraday's first law. Faraday's first law. Now come to Faraday's second law. Faraday's second law. Now come to Faraday's second law. अच्छा ये हमें कौन करिया ना 3 different electrolytic solutions are connected in a series. Connected in a series. Okay. Company three different vessel containing 3 different solution. प्रथमटा नेली सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड नेली कॉपर सल्फेट, चार नेली औरिच क्लोराइड गोल्ड क्लोराइड. वर्तमान एक गोटे बैटरी को कनेक्ट कर देली. गोटे बैटरी को कनेक्ट कर देली. अच्छा सीरीज रे ये कनेक्ट है ना. इट पॉजिटिव ये नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तब हम कौन करछे ना 3 different vessel containing solutions of silver nitrate, copper sulfate and gold chloride. These electrolytic cells are connected in series रे कनेक्ट कली so that गोटे बैटरी को कनेक्ट है same amount of current passes through the electrolytic 3 different electrolytic solution. silver nitrate solution में जति की परिमाण इलेक्ट्रिसिटी पास है कॉपर सल्फेट रे मध्य सेति की गोल्ड क्लोराइड रे मध्य सेति की. अच्छा एठी कोन हो ना कैथोड पाखरे गोल्ड डिपॉजिट हेबो, कैथोड पाखरे कॉपर डिपॉजिट हेबो, कैथोड पाखरे सिल्वर डिपॉजिट हेबो, कॉपर डिपॉजिट हेबो, गोल्ड डिपॉजिट हेबो. लॉ कौन कहूँ सेकेंड लॉ
ना व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जेहेतु मु गोटी बैटरी को कनेक्ट करिछि तेबे तीनटा जाक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे समान परिमाण रो करंट पास करुछि सो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through different electrolytic solutions connected in series, then the mass of the substance deposited or liberated at the electrode are directly proportional to their respective equivalent masses. जितकी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पाखरे डिपोजिट हबो इटी सिल्वर डिपोजिट है कॉपर डिपोजिट है गोल्ड डिपोजिट है जितकी मास रो सब्सटेंस डिपोजिट है इलेक्ट्रोड पाखरे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मासेस तमाने वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर by equivalent weight of silver. Similarly, weight of copper by weight of gold is equal to equivalent weight of copper by equivalent weight of gold. Let us derive this equation जहाँ में definition ने कहले when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, then the mass of the substances deposited or liberated at the electrode are directly proportional to their respective equivalent masses or chemical equivalents. Now let us derive this equation. ठीक है देखो जी फैराडेज फर्स्ट लॉ अनुसार सिल्वर नाइट्रेट रो सॉल्यूशन रे जेतले इलेक्ट्रोड पाखरे कैथोड पाखरे सिल्वर डिपोजिट हला तबे वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड is equal to Z silver into Q, where Q is the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. आमे जदि भाबिबा जे यदि सेम बैटरी को कनेक्ट करा अछि Q कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी तीनटा तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे पास करा जायछि then the weight of silver deposited is equal to Z silver into Q and weight of copper deposited is equal to Z copper into Q, equation 2. Similarly, weight of gold deposited is equal to Z gold into Q. Now, dividing equation 1 by equation 2, weight of silver by weight of copper is equal to Z silver by Z copper. Q cancels. We know Z is equal to E by 96,500. So Z silver is equal to E silver by 96,500. Similarly, Z copper is equal to E copper by 96,500. 96,500 cancels, that is equal to E silver by E copper. So the weight of substance deposited at the electrode or weight of metal deposited at the electrode are directly proportional to their respective equivalent masses or chemical equivalents, electrochemical equivalents. जमती आम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 द्वारा डिवाइड करके पाइले सेमती डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 वी गेट weight of copper by weight of gold is equal to Z copper by Z
gold is equal to E copper by 96,500 divided E gold by 96,500, that is equal to E copper by E gold. So this is Faraday's second law. This is equation 1. हमें ए इक्वेशन 1 टाको बाहर कर ले टेकिंग these two solution. ए इक्वेशन टाको बाहर कर ले टेकिंग these two solution. The weight of substance deposited at the electrode are directly proportional to their respective equivalent masses when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series. So today is complete. We will be discussing electrolytic resistance and electrolytic conductance in our next class. So now let us stop.